Hello student, today we will solve question number 24, 25 in class 12 commerce subject account. In account our topic is running goodwill, okay, calculation of goodwill. In question number 25 is given calculation of goodwill of a firm on the basis of the following particular by capitalization of super profit. Okay, again we have to calculate in this question goodwill by capitalization of super profit. Okay, this information has given first average profit 2 lakh, total assets 1 lakh 50,000, partners capital 12 lakh, and normal rate of return is 10%. So let's we calculate goodwill. Okay, first of all we will write normal profit. We have to find out normal profit. Okay, normal profit is equal to 12 lakh 10% of 12 lakh 10 upon 100. Okay, so it will come 1 lakh 20,000. Okay, and average profit is given average actual profit is equal to 2 lakh rupees. Okay, it is given average profit, average actual profit. Now we will find out super profit. Super profit is equal to actual average profit minus normal profit. Okay, actual average profit is 2 lakh minus 1 lakh 20,000 normal profit. So here will come 80,000. Okay, now you have to write here actual average profit. Okay, now we have to find out goodwill. Goodwill is equal to, we have to find out capitalization value of super profit. Okay, so here we will write 80,000 divided by 10 into 100. So it will come 8 lakh. Okay, it is our goodwill value. Now goodwill is 8 lakh. Okay, अब आप सोच रहे होंगे इसके पहले हमने क्वेश्चन जो किया था 22 नंबर का, उसमें असेट्स दी थी, यहाँ पर भी असेट्स दी है, असेट्स की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ असेट्स का यूज क्यों नहीं किया? ओके, वहां पर उस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी थी। ठीक, कैपिटल नहीं दी थी तो हम कैसे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता नहीं उसके अंदर। तो हमने डायरेक्टली जो एवरेज प्रॉफिट था उसका कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाली और उसमें से असेट्स को माइनस कर दिया, गुडविल आ गई। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालना है और वही गुडविल रहेगी। ओके, सो नॉर्मल प्रॉफिट वी हैव फाउंड आउट 1,20,000, actual average profit has given, directly we have written 2 lakh, and super profit is equal to actual average profit minus normal profit. हमारा super profit आ गया 80,000 और goodwill is equal to 8 lakh. Okay students, now we have completed question number 25. Now student we will solve
Question number 26. Okay, in question number 26 as given, a firm had a capital of 1 lakh. The rate of normal return on capital is 10%. In the present value of rupees 1 by annuity method is 2.48685. Okay, the actual average profit for 3 year is 12,000. Find out the value of goodwill by annuity methods. Okay, in this question we have to find out the goodwill value by annuity method. Okay, वार्षिकी पद्धति के द्वारा. Okay, now first of all we will write calculation of goodwill. Now we will find out first of all normal profit. Normal profit is equal to 10% of 1 lakh. Okay, 10,000. Now normal profit is 10,000. Okay, then we have to write actual average profit. Actual average profit is given in question 12,000. Now we will find out super profit. Super profit is equal to actual average profit minus normal profit. Okay, actual average profit is 12,000 minus normal profit 10,000. So super profit will be 2,000. Okay, now we have to find out goodwill value by annuity methods. So we will write here goodwill is equal to super profit into present value of 1 by annuity. Okay, present value of 1. Okay, now present value of 1 we have to multiply here in super profit. So super profit is 2,000 and here is given present value of 1 2.48685. Okay, 2.48685. Okay, so here we have to multiply 2.48685. Okay, 48685 into 2,000. So here will come, okay student, here will come 0. ओके, अब यहाँ पर 4 संख्या, तो 4 संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 4973.70. Okay student, our goodwill value is 4,973 रुपीज़ 0.70. ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में गुडविल का कैलकुलेशन करना था वो एन्युटी मेथड से करना था. एन्युटी मेथड मीन्स वार्षिकी पद्धति. वार्षिकी पद्धति में होता ये है कि जो प्रॉफिट हुआ हमें इस साल, वो प्रॉफिट कितने साल तक होता रहेगा. ठीक है, सेम इसी प्रकार का प्रॉफिट कितने साल तक होता रहेगा, ये ज्ञात करने के लिए हम वार्षिकी पद्धति का प्रयोग करते हैं. और इसमें
₹1 की प्रेजेंट वैल्यू दी रहती है, ठीक। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 जो दी रहेगी उससे सुपर प्रॉफिट में इंटू करना रहता है, ठीक है। फिर जो आएगी वो हमारी गुडविल आएगी। बाकी सारी प्रोसेस वही करना है जो हम अभी तक करते आए हैं। मीन्स सुपर प्रॉफिट मेथड में जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकाला, फिर सुपर प्रॉफिट से ही निकालना रहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मीन्स गुडविल का वैल्यू। Okay student, now we have completed question number 26. Okay student, now we will solve question number 27. And question number 27 has given this information: find out the value of goodwill of a firm from the particular given below by NAT methods. Okay, this information is given. First, annual net profit after tax 1,50,000, capital employed 8 lakh rupees, normal rate of return 12% per annum. Okay, present value of NET of 145 year 3.604776. Okay, now we have to find out goodwill. So first of all, we will find out normal profit. Okay, normal profit will be uh, capital employee 8 lakh, normal profit rate 12%. Okay, so we'll cut this value 96,000. Okay, normal profit is 96,000 and actual average profit is given 1,50,000. Okay, so super profit will be actual average profit minus normal profit. So actual average profit is 1,50,000 minus normal profit 96,000. So here will come 54,000 rupees. Okay, our super profit is 54,000. So now goodwill will be, goodwill is equal to super profit into present value of 1. Present value of 1. Okay, super profit is 54,000 into present value of 1 is 3.6047776. Okay, so we have to multiply here 3.6047776 divided by 45,000. Okay,
So our goodwill will be 194.657904. Okay, students. Now we have completed question number 27.